Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve fourth problem of final account intermediate first year accountancy. It is telling that prepare trading account of Hyderabad traders as on 31st December 2017. So immediately after reading this, we need to write the format, that is trading account of Mrs. Hyderabad traders. इधर business का नाम आ गया. And what will be the second line for the year ending 31/12/2017? इधर date आ गई as per our question. And always remember, if you are making an account, then it is mandatory to write DR and CR on both the sides, right? So let us begin with the credit side of trading account. Trading account में credit side लिखते क्या? सिर्फ दो items आते, sales and closing stock, right? So let us see the sales. What is the value of sales? That is 39,000. And sales लिखने से पहले हमेशा हमको रुक के observe करना है. What we need to observe? सेल्स रिटर्न है क्या, चेक करो, राइट? अगर है तो सेल्स के अमाउंट को इनर कॉलम में लिखते हैं हम. सो नाउ लेट अस सी, रिटर्न्स दो जगह दिख रहा, एक का डेबिट बैलेंस है और एक का क्रेडिट बैलेंस है. ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, राइट? एंड परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सो दिस डेबिट बैलेंस इज सेल्स रिटर्न and credit balance is purchase return. So we have to write the amount of sales in the inner column, right? So let us begin with that. That is 39,000, and from this 39,000 we need to subtract sales return, that is 800. So 39,000 minus 800 will be 38,200. ये outer column में लिख दिया. Now the last item is closing stock. है क्या देखो क्वेश्चन में? Opening stock, sales, no, closing stock is not available in question. नहीं है, दोनों को लिखो. Now directly we'll move towards the debit side. Debit side first permanent item क्या था? Opening stock है, हाँ है. कितना है? That is 4,700. We'll write 4,700 opening stock on the debit side of trading account. Then after that, the second permanent item is purchases. और purchases लिखने से पहले रुक जाना. Purchase return है क्या देखना. अगर परचेज रिटर्न है तो क्या करना? परचेजेस का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. सो द परचेजेस इज 20,000 एंड परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता बोला, तो दैट इज 400. सो व्हाट विल राइट? विल राइट परचेजेस इन द इनर कॉलम ऑफ डेबिट साइड, एंड फ्रॉम दिस परचेजेस 20,000 वी नीड टू सबट्रैक्ट परचेज रिटर्न, दैट इज 400. सो द एक्चुअल द नेट परचेजेस विल बी 19,600, और इसको हम आउटर कॉलम में लिखते. डन. Third permanent item is wages, that is 1,650. Done. So after this we will observe all the items, right? अब पूरे items को observe करो अच्छे से. Observe करे बाद we need to identify expenses related to factory and goods. अगर फैक्ट्री का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखो, गुड्स का खर्चा है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखो. लेट अस ऑब्जर्व फ्रॉम द बिगनिंग. ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आप? गुड्स. किधर करते? फैक्ट्री में. तो ये फैक्ट्री का खर्चा है. फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता. सो विल राइट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. देन आफ्टर दैट रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस हो गया, वेजेस हो गया, कोल एंड वाटर, राइट? दीज विल एक्ट एज अ फ्यूल इन द फैक्ट्री. तो ये खर्चा फैक्ट्री का है, फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आता, इसलिए हम कोल एंड वाटर को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, right? Coal and water. Then after that the next item is purchases हो गया, returns debit balance means sales return हो गया, carriage goods का खर्चा है, ठीक है? So the expenditure made on goods must be considered on the trading account debit side. So we have to write this item on the debit side of trading account, that is carriage. Then after that the last item is import duty. Duty दिखते कि this is nothing but tax on goods. तो गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है हमको. सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल राइट इंपोर्ट ड्यूटी 1,000. देन इमीडिएटली आफ्टर दिस वी हैव टू डू द टोटल. दोनों तरफ का टोटल करो और देखो ज्यादा कौन सा है. क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 38,200, और जो टोटल ज्यादा रहता है वो हम दोनों तरफ लिख देते. 38,200 ऑन द क्रेडिट साइड एंड 38,200 ऑन द डेबिट साइड. एंड फ्रॉम दिस 38,200 what we need to do? We need to do the total of debit side and subtract. ये 38,200 में से डेबिट साइड का टोटल करो और subtract करो. So क्या आता? आंसर क्या आता? ग्रॉस प्रॉफिट.
Gross profit carried down, that is 9,350, and ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखे बाद ब्रॉड डाउन करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. तो क्या था इधर? बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, दैट इज 9,350. एंड वी हैव अ नोट हियर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज गिवन ट्वाइस. क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दो बार दिख रहा, और हम इधर कंसिडर ही नहीं करें, हटा दिया उसको, एक ही बार कंसिडर करें. एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम ले लिए, दूसरे को हम छोड़ डालें. दैट इज देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन. सो वन इज नॉट टेकन इनटू द प्रॉब्लम. ये एक नोट लिख देना है. Right? From this, we have completed the fourth problem of final account. In the next video, we are going to deal the problems related to profit and loss account. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.